Hope you all are having a wonderful day today. And before we start, I wish you all a very happy New Year because today we have a New Year as per Indian calendar. And I'm Kuldeep Bhargav from Team HDOR, and I welcome you all in today's talk show. And today's talk show is Meet the Achievers of 100 Days of Running 2021. Why they are achievers, we'll talk about it. And in this session, my co-host is Mayank Gupta, and he is a co-founder of SDR. And in let's talk about the achievers. So, what happened in the edition of 2020? Irina Hazarika, every all the SDR community know about her. उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया. इनिशिएटिव क्या था कि जो एसडीआर पार्टिसिपेंट्स है, कुछ जो भी अपने आप को वॉलंटियर करना चाहे, उनकी रनिंग को अप स्केल करना. जिन्होंने 10K किया है उनको 21 किलोमीटर के लिए ग्रेजुएट करना, एंड जो ऑलरेडी 21 किलोमीटर कर चुके हैं उनको फुल मैराथन के लिए ग्रेजुएट करना. सो उस प्रोसेस में बिनय शाह फ्रॉम दिल्ली उन्होंने फुल मैराथन के लिए ट्रेन किया पार्टिसिपेंट्स को, एंड मनीष जायसवाल फ्रॉम मुंबई उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया फॉर 21K हाफ मैराथन. सो व्हाई इरिना मैम ने ऐसा किया? क्योंकि एक स्टोरी है, एक नॉट ए स्टोरी बट इट्स अ ट्रू थिंग कि पार्टिसिपेंट ने 2017 से जब स्टार्ट की अपनी जर्नी, सो उन्होंने 100 डेज को यूज किया अपने आप को फुल मैराथन के लिए ग्रेजुएट करने के लिए. सो उन्होंने अपना ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो किया, बिकॉज जब इवेंट चल रहा होता है एक मोटिवेशन होता है सब में, एंड उस मोटिवेशन में एक ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो किया था, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, एंड वो सक्सेसफुली उन्होंने फुल मैराथन 2018 में टाटा मुंबई मैराथन में की. देन इन द ईयर ऑफ 2018 जब 100 डेज ऑफ रनिंग स्टार्ट हुआ, चल रहा था, उन्होंने खुद को अप स्केल किया फॉर द अल्ट्रा रन. अल्ट्रा रन उन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया, एंड बहुत ही सक्सेसफुली उसके बाद उन्होंने स्टेडियम रन किया 12 आवर. सो उसके बाद उन्होंने अपने रनिंग स्किल को फर्दर इम्प्रूव करते हुए 2019 में फर्दर ट्रेनिंग प्रोसेस फॉलो किया, एंड उन्होंने 160 किलोमीटर सिटी टू सिटी रन किया. दैट वाज द कि 100 डेज में जिस तरह का एक माहौल बनता है उसमें अगर हम एक ट्रेनिंग प्रोसेस को फॉलो करें, सो हमारी रनिंग परफॉर्मेंस, हमारी रनिंग कैपेसिटी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकती है. उन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने ये इनिशिएटिव सजेस्ट किया, एंड विनय एंड मनीष ने एज अ ट्रेनर का रोल प्ले किया, एंड बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने एज अ ट्रेनी अपने आप को नॉमिनेट किया. Because of some constraint of the virtual studio, we cannot invite everyone. So we identified a few people जो सक्सेसफुली ट्रेनिंग की, एंड उनको इनवाइट किया. सो जिन लोगों ने 42 किलोमीटर के लिए ट्रेनिंग ऑप्ट की, दोज वर फुरकान अली फ्रॉम लखनऊ, पेमा लोई फ्रॉम गुवाहाटी, राजू अल्लरी फ्रॉम हैदराबाद, एंड जिन्होंने मनीष जायसवाल के अंडर ट्रेनिंग की वो है केदार फ्रॉम पुणे, रोशनी फ्रॉम कोलकाता, एंड सोम फ्रॉम मुंबई. सो let me introduce Binay Sah. And Binay Sah is an ultra runner. Recently, last Sunday, जब न्यू दिल्ली मैराथन था, he was a podium finisher in his age category. And if I am not wrong, he did it in 2 hours 50 minutes, right, Binay? Yeah. Yes, sir. एंड ऑल्सो अभी तक आपका 24 आवर्स स्टेडियम रन का रन रिकॉर्ड ब्रेक क्यों है जो Sir, लास्ट break हो गया. स्टेडियम? राइट सर, आई डिड 236.9 किलोमीटर और अभी 240 का बेस्ट है.
ओके, सो 36 किलोमीटर इन 25 आवर्स जो उन्होंने लास्ट ईयर चंडीगढ़ स्टेडियम रन में बनाया था, दैट शोज कि उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे है, एंड उनकी जो रनिंग की क्वालिटी क्या है वो इससे निकल के आती है। एंड जो मुझे पता है, विनय भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते रहते हैं 100 डेज के दौरान, टू लर्न न्यू थिंग्स इन द रनिंग टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द रेसेस। वो हम जानेंगे विनय से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेशन। लेट्स टॉक अबाउट विनय मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल भी अल्ट्रा रनर है। ही इज द फाउंडर ऑफ स्नेल टू बोल्ट रनिंग ग्रुप दैट्स इन द मुंबई। नाम आप समझ सकते हैं, स्नेल टू बोल्ट, तो काफी इंटरेस्टिंग नाम है। एंड ही आल्सो हैज अ लॉट्स ऑफ पोडियम इन हिज पोर्टफोलियो। उन्होंने जो उनको काफी अच्छी इवेंट्स लगी, दैट इज 100 किलोमीटर, दैट वाज द पगडंडी रन इन मानेसर, गुड़गांव। So 100 kilometer, yes, he was podium finisher there. Then he was podium finisher in Kutch White Desert Run. कच्छ में वाइट डेजर्ट है, वहां पे एक रन होती है, बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि दैट्स नॉट लाइक रोड और लाइक मड ट्रैक, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर डेजर्ट में आपको रन करना होता है। एंड दैट वाज 72 किलोमीटर रन एंड ही वाज अ पोडियम फिनिशर। देन रिसेंटली उन्होंने 60 किलोमीटर किया था ट्रेल रन अरुणाचल प्रदेश में, एंड that's right. ही डिड इट विद द पोडियम फिनिश। सो और भी बहुत से उनके अचीवमेंट्स हैं, विल टॉक अबाउट इट इन द कोर्स ऑफ द टॉक शो। सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी। So before I talk about their achievements, अभी मैं अपने ऑडियंस से भी कहना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, they can also share their experience and will share their experience on the screen so that our other audience can know about them. Okay, so in this thing, फुरकान अली from लखनऊ जिन्होंने 42 किलोमीटर के लिए ट्रेनिंग ली थी। Okay, so before the session, before the training session, उनका था 27 kilometer, but he somewhere he was not convinced with the performance and all, so he went through the training and उन्होंने recently लखनऊ full marathon किया है with the timing of 5 hours 10 minutes. Amazing. And he started, और ऐसा नहीं है वो काफी टाइम से रनिंग कर रहे हैं, he recently started his running in 2019. So yes, he improved a lot in the session. Then Pema Loi from Guwahati, she started running in 2017, and before the training program उनका longest run was 21 kilometer, and after the No, sorry 30 kilometers. 30, 30 not kilometers, 21. 30. 30. yeah. Binay was very Yeah, kind to so 30. after the training Sorry. program, she was able to finish the 30 kilometer successfully. So yes, she also improved her running. Then Raju Allari from Hyderabad. Raju Allari को बहुत से लोग जानते हैं SDR community because he is a very active person in the community, and he keep posting about his runnings, his events, everything. So he started running long back, but he became serious and he started track running from late 2019. And before the training program, his longest run was 22 kilometer. And on the last day of 100 days of running 2021 edition, he could finish full marathon on the last day to ensure that yes, he was able to do it. And after that, he also explained us that before that उनका वीकली माइलेज 60 किलोमीटर रहता था, जो इम्प्रूव होके 90 किलोमीटर हो गया, एंड उनकी फिटनेस भी उसके साथ इम्प्रूव हुई, एंड नाउ ही इज एबल टू डू साइकिलिंग ऑल्सो विद रनिंग। एंड रिसेंटली उन्होंने सक्सेसफुली टूर 100 भी कंप्लीट किया। एम आई करेक्ट राजू सर?
Yes, sir. Tour de 100, all 100 days, gold medal finisher with 2,500 kilometers in 100 days, right? For the first Awesome, time, basically. awesome. So yes, that says उनकी फिटनेस में कितना इम्प्रूवमेंट आया होगा. लेट्स टॉक अबाउट अदर पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने 21 किलोमीटर के लिए ट्रेनिंग दी. केदार फ्रॉम पुणे. He also started running like 4 years back in 2018, and before the training program, उन्होंने 21 किलोमीटर किया था, but he was not convinced with his performance because he was not able to run all the way. So he decided कि नहीं मेरे को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना है एंड अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके दिखाना है. एंड he did it on the last day of 100 days of running. He was able to do the 21 kilometer, and throughout the route he was able to run. So this is how he improved himself, and this year he is planning to again upscale his performance to 30 kilometer, 35, 32 kilometer. So yes, he improved a lot. Let's talk about Roshni from Kolkata. Yes, she started again very recently, December 2020, hardly 1.5 year back. So उन्होंने भी 21 किलोमीटर किया हुआ था बिफोर गेटिंग इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम. बट यस, बट परफॉर्मेंस वाज हर कंसर्न, क्योंकि जब उन्होंने 21 किलोमीटर किया था तो उनकी टाइमिंग थी 3 आवर समथिंग. नॉट कन्विंस्ड विद हर परफॉर्मेंस, सो शी डिसाइडेड कि नहीं मेरे को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना है. एंड ड्यूरिंग द इवेंट ट्रेनिंग फॉलो की, एंड ऑन द लास्ट डे शी वाज एबल टू डू इन 2.5 hours. So she proved it. Yes, training was worth, and she improved a lot during the training. And in our panel, Som from Mumbai. So he comes from the Mirabai and the runners from Mumbai, and he used to run since long time, but he was on and off because of sometime injuries or some other things. But after getting into the training program, he up the confidence, and he improved his half marathon performance. Pre-training program, his timing was 3 hour 20 minutes, 3 hour 30 minutes, but now it has been around 2 hour 30 minutes like that. So yes, so I congratulate all of you who trained through the program and learned a lot. And yes, Manish and Binay, you have done an excellent job, I must say. True. So let's start. मैंने बहुत बोल लिया because I think last 10 minutes से मैं ही बोल रहा हूँ. Now I want to understand from Binay and Manish. So Binay, आई नो जो भी आपने सिखाया वो अपने एक्सपीरियंस से सिखाया. आप जो फॉलो करते हो वही आपने डोज बाकी पार्टिसिपेंट्स को दी कि इस तरह से फॉलो करना है. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट प्रोसेस? First of all, thank you, Kuldeep ji, Mayank, Ina ma'am, for for this opportunity basically. तो हुआ क्या कि इरीना मैम मेरे पास का फ़ोन आया मेरे पास जब ये HDOR 2021 स्टार्ट होने वाला था कि अगर आप कुछ ट्रेनिंग प्लान वगैरह अगर दे सकते हैं करके, कुछ एथलीट्स हैं, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैं रनिंग से पिछले 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये एक टाइम था, एक मौका था मेरे लिए कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँ. एंड और मेरे को एक HDOR का प्लेटफॉर्म मिला इसको मतलब अपने आप को मतलब कम्युनिटी को कुछ शेयर करने के लिए. तो मेरी जो जर्नी है HDOR की वो 2018 में मैंने HDOR का इवेंट में मैंने रजिस्टर किया था और उसको रजिस्टर करने का जो मेन जो कारण था, मेन जो रीजन था वो था कि मैंने उस टाइम कॉमरेड्स के लिए अपने आप को रजिस्टर किया हुआ था, राइट. और मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था रनिंग में, तो अपने आप को कंसिस्टेंट में रखने के लिए मैंने HDOR को रजिस्टर्ड किया. आई थिंक उस टाइम पे वो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था 2018 में.
और मैंने थ्रू HDOR मैंने अपने आप को मतलब डेली बेसिस पे मैंने वीकली माइलेज मैंने गेन किया, और बाद में मेरा वो कॉम्रेड्स भी काफ़ी अच्छा रहा, जो कि जुलाई एंड में था, जुलाई फर्स्ट वीक आई थिंक, जुलाई फर्स्ट वीक में। फिर उसके बाद 18 के बाद मैंने 2019 मैंने रजिस्टर किया, 20 भी रजिस्टर किया, 21 भी रजिस्टर किया, और मैंने हमेशा प्लान किया कि मैं 1500 किलोमीटर तक, मेरा बेसिक एम जो रहा HDOR को रजिस्टर करने का, तो बेसिकली एक माइलेज को बिल्डअप करने का था, राइट। और इसी अल्ट्रा रनिंग कम्युनिटी में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक यू नो केशव मानिक, जो कि 2018 में विनर भी थे, राइट। तो वो भी उनका भी मैंने देखा HDOR में, बलराज कौशिक, प्रवीण सांगवान ने अभी अपने आप को, प्रवीण सांगवान ने भी अभी क्वालिफाई किया है फॉर दिस चैंपियनशिप लास्ट ईयर, जिसमें टीम ने गई थी। तो HDOR ने काफ़ी लोगों की हेल्प करी। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई रीना मैम के थ्रू कि अगर आप कुछ हेल्प करें, तो मैंने कहा ओके। तो उस टाइम पे मेरे पास अराउंड 26 पार्टिसिपेंट ने आए मेरे पास, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, राइट। तो उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रनर्स थे बेसिकली। तो किसी ने 21 किलोमीटर तक किया था, कोई ऐसी कैटेगरी, मतलब बेसिकली मैंने उनको डिवाइड किया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए में वो एथलीट थे जिन्होंने 21 किलोमीटर तक का रन किया हुआ था मैक्स टू मैक्स। कैटेगरी बी में 21 किलोमीटर से लेके 21 किलोमीटर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया था, बट उन्होंने 42 किलोमीटर नहीं किया था, राइट। और कैटेगरी सी वो थे जिसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 42 किलोमीटर किया है, बट उनको अपनी टाइमिंग इम्प्रूव करनी है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के एथलीट्स थे, तो उनके मैंने सबके मैंने स्ट्रावा लिंक लिए, उनको मैंने स्टडी किया कि कौन कैसे, मतलब किन लास्ट 1 मंथ 2 महीने पहले इनकी ट्रेनिंग कैसी रही है, किस तरीके से दौड़ते हैं, क्या पेस रखते हैं। तो मैंने वो स्टडी किया। तो मेरा जो ट्रेनिंग प्लान था, बेसिक मेरी लर्निंग था, बेसिक लर्निंग फेज था कि मैंने इनको ना सिंपल 100 डेज ऑफ रनिंग है, राइट। तो मैंने पहला जो 1 महीना है उसको मैंने इसको रखा एरोबिक बेस बिल्डिंग। तो मैं सबको मैंने यही बोला कि अभी कोई प्लान नहीं है, आप सबको अपना एरोबिक बेस बिल्डअप करना है अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सो डैट ऐसा ना हो कि इंजरी होए, और मतलब आपका कुछ, मतलब बेसिकली इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट था कि एरोबिक बेस में आप अपने आप को जानो, अपनी ब्रीथ को, नोज ब्रीदिंग करो, इस तरीके सबको मैंने प्लान दिया, राइट। फिर जो सेकंड फेज था वो था 4 वीक का, जिसमें एंडोरेंस बिल्डिंग फेज जो नाम रखा था हम लोगों ने, उस पे फिर हम लोगों ने थोड़ा सा माइलेज को बिल्डअप किया हर एक किसी के, कि जो लोग 30-40 रन कर रहे थे वीकली माइलेज पे, उनको 40-50 किया, जो 60-70 ले रहा था रन वो 70-80। तो जो हमारा सेकंड फेज था वो पूरा कंप्लीटली एंड्योरेंस बिल्डिंग फेज था। और जो लास्ट के जो 40 डेज थे वो आपका स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्लान था। तो उसमें भी हम लोगों ने माइलेज वही रखी जो हम लोगों ने सेकंड फेज में रखी थी, बट इसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया स्पीड रन, एंड्योरेंस रन, और और लॉन्ग इजी रन काइंड ऑफ, राइट। और इस तरीके से ये तो आप वो रन्स वगैरह मॉनिटर कैसे करते थे? सर बेसिकली ना जब मैंने इनको प्लान दिया अपनी टीम में, तो वो लोग उसको एक एक्सेल शीट अपडेट भी करते थे, और उसके अलावा मैं वीक में एक आध बार स्ट्रावा में जाके, और हमारे ना गूगल हम लोगों का जूम मीटिंग होती थी वीकली बेसिस पे, बाद में हमने वो फोर्टनाइटली कर ली थी। तो जूम मीटिंग में पूछता था मैं सबसे कि आज क्या रहा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, और क्या कैसा फील हो रहा है। क्योंकि रनिंग ऐसी चीज है ना, बेसिकली जो हम लोगों ने प्लान किया HDOR बेसिकली वर्ड टाइम ऑन फीट, और कुछ नहीं है, राइट। आप अपने आप को कितना टाइम देते हो अपने फीट पे, वो मैटर करता है, राइट। राइट। और आपको फील से दौड़ना है, आपको मतलब वो नहीं कि जबरदस्ती दौड़ना है, करना ही है, वो चीज बिल्कुल नहीं है, राइट। राइट। तो इस तरीके से प्लानिंग मैंने डिजाइन करी अपने टीम मेंबर्स के लिए, और जो कि काफी सक्सेसफुल रहा एंड ऑफ द डे। ग्रेट, सुपर। सो मनीष, जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे 21 किलोमीटर के लिए, सो आपको किस तरह के चैलेंजेस आ रहे थे? पार्टिसिपेंट्स किस तरह की क्वेरीज पूछ रहे थे, या फिर को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स डालने पड़े? कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस फॉर दैट?
Manish, can you hear me? या हेलो। Yeah, we can hear you. हाय, फिर से रिपीट करेंगे? आई थिंक आई मिस्ड इट। तो आई मैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जानना चाहता हूँ कि जब आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहे थे, तो पार्टिसिपेंट्स की साइड से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे या क्वेरीज आ रही थी, एंड आप उनको कैसे एड्रेस कर रहे थे? सो कैसे अभी ग्रुप में जैसे 20 लोग को हम लोगों ने रखा था, मोर देन 20 हम लोगों ने अलाउ नहीं किया था, सिर्फ जो भी फर्स्ट 20 आए थे उनको रखा था। तो अभी सब अलग अलग तरीके के रनर से, कोई जिन्होंने सिर्फ 5 किलोमीटर तक किया था, या किसी ने ज़्यादा रनिंग नहीं किया था, ज़्यादा इतना रनिंग में ये नहीं था, मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, वो लोग थे। कुछ लोग 10 किलोमीटर प्लस रनर से, कुछ लोगों ने 21 पहले किया हुआ था अच्छे से। तो सबके अलग अलग क्वेरी। कुछ लोगों के लिए जो जो 5 किलोमीटर या जस्ट स्टार्ट किए थे रनिंग, उनके लिए ये क्वेरी था कि मैं 21 कर पाऊंगा क्या सिर्फ 100 दिन में। और जो एक्सपीरियंस रनर्स हैं जिनके 21 हो चुके हैं, क्या मैं अच्छा टाइमिंग कर पाऊंगा, बिकॉज मैं टायर्ड हो जाता हूँ, या टायर्ड हो जाती हूँ, तो फिर मैं अचीव कर पाऊंगी, मैं मेरा टाइमिंग रिड्यूस कर पाऊंगी क्या, मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे से नहीं होता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस उनके होते थे। फिर उनको एड्रेस तो जैसे होता था, मोस्टली हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग कर लेते थे वो टाइम पे। नहीं तो जैसे कि बीने ने बताया, तो ऐसे 21 का भी एक एक्सेल शीट था, जिस एक्सेल शीट में हम लोग जैसे अभी जैसे मंडे टू 21 ग्रुप्स को हर वीक का प्लान्स मिलते थे, मंडे टू सैटरडे संडे तक क्या करना है, एंड एवरी संडे दे गेट अ न्यू प्लान। वैसे तो वो जो भी उन्होंने किया, मंडे क्या किया, ट्यूसडे किया, एवरीडे दे हैड टू अपडेट। ऐसा नहीं है कि संडे को जाके 7 दिन का 6 दिन का अपडेट करेंगे, ऐसे नहीं, हर दिन का उनका रन हो गया, देखो उनका जो भी है गार्मिन का लिंक है या स्ट्रावा का लिंक है, जो भी लिंक है वो जाके वहाँ पे पेस्ट कर देते थे। व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट टाइम विद इन अ डे, और नेक्स्ट डे तक मैं चेक करके उस पर ही फीडबैक दे देता था। अभी कभी कभी मैं फीडबैक एक्सेल शीट पे दे देता था, बट फिर भी ऐसा होता है कि वो फीडबैक्स शायद मैं तो समझ नहीं पाता है, तो हम लोग 1-to-1 भी कोऑर्डिनेट करते थे ओवर द व्हाट्सएप या कॉल पे। तो इस तरह कोऑर्डिनेट करते थे और उनका डाउट सॉल्व करते थे। आई एम श्योर काफी हेक्टिक रहेंगे वो 100 डेज, बिकॉज आपकी इट्स खुद की रनिंग, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, देन पार्टिसिपेंट्स को भी उनकी क्वेरीज भी आंसर करना। इट्स ओके, बिकॉज आई लव दैट, बिकॉज मैं मेरे अदर देन दैट फॉर स्नेल्स टू बोल्ट आल्सो आई डू। सो फॉर एचडीआर, बिकॉज मैं 2018 से है, जब 2018 में जब कोई भी एचडीआर का कोई फीस नहीं रहता तभी से स्टार्ट, कल 2019 आई थिंक मिस किया था, 2021 22 में भी पार्टिसिपेट किया हूँ। तो दिस इज द 4th ईयर आई थिंक, सो आई एम पार्टिसिपेटिंग। तो जब इरिना ने बोला कि ये ऐसा मेरा प्लान है, करोगे, मैंने बोला यस यस व्हाई नॉट, या कुछ कम्युनिटी के लिए करना है तो। एंड वी सॉ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, जैसे सोम है, केदार है, रोशनी है, अरुणिका है, इंद्रानी है, ऐसे देयर आर सो मेनी, रोहित, मतलब जो लोग थे उन लोग ने, मतलब दे वेर एक्टिवली डूइंग द थिंग इज। ऐसा नहीं कि हमने प्लान कर दिया और लोगों को प्लान मिल गया, लोग कर रहे नहीं है। इसके लिए मैं वीकली प्लान्स बनाता था और लोगों से फीडबैक लेता था, तो और उनका रन देखता था, इंडिविजुअल एक एक रन मॉनिटर होते थे। सो और उसके जो आप इन केस कोई पार्टिसिपेंट से नहीं कंप्लीट कर पाता था, ठीक है, सो उस केस में आप कैसे कोर्स करेक्शन करते थे? यस, तो आई एम श्योर ऐसा वो बहुत ऐसा बार होता है, सिंस वी ऑल आर नॉट प्रोफेशनल एथलीट, हम सब एमेचर एथलीट्स है, और सब वर्किंग है, लाइफ बाद में वर्क लाइफ बैलेंस भी करना है, सब कुछ करना है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑफिस से डिले हो जाता है या कुछ पर्सनल काम होता है, तो हमारा रनिंग नहीं हो पाता जो प्लान दिया हुआ है, समझ लो जो भी प्लान 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, संडे रहने के बावजूद भी नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर वर्क। तो वो टाइम पे वो लोग बोल देते मेरे से नहीं हुआ है सर, या एक्सेल शीट में कुछ लोग तो 1-to-1 कर देते थे, तो उनको मैं बोल देता था कल इतना कर लेना, उनका प्लान फिर ऑल्टर कर देता, बिकॉज रनिंग इज व्हाट इट डजंट वर्क लाइक अ बुक, एक बुक की थियरी की तरह नहीं चलता है। आई विल गिव, नहीं सब लोग जाके इतना कर रहे हो तो नहीं चलता है। तो अगर ऑल्टर करना, बिकॉज वो आपका हेल्थ इश्यूज भी आता है, बिकॉज 100 डेज इज नॉट एक वीक का टाइम नहीं है,
ड्यूरिंग द 100 days many challenges हुई, किसी का हेल्थ खराब होता है, कुछ खराब होता है, फिर उसको कैसे रिस्टार्ट करना है, अगेन जीरो से स्टार्ट करना है या इससे कितने दिन का ब्रेक हुआ है। तो ऑल दिस थिंग वी यूज टू सी, उसको 1 to 1 कोऑर्डिनेट करके, और कुछ चीज़ें ग्रुप में भी कोऑर्डिनेट करते थे लोग, वहाँ पे भी डाउट पूछते थे। तो वहाँ पे जो चीज़ ग्रुप में कर सकते थे ग्रुप में करते थे, जो चीज़ें 1 to 1 पूछ के करना चाहिए था 1 to 1 करके। Great, great. So thanks Manish and Vinay for sharing your experience. And so let's अभी जिन्होंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस सुनते हैं। सो इफ आई एम राइट, आपने बैकयार्ड माइल चैलेंज से एसडीओआर की जर्नी स्टार्ट की है, राइट? Som, we are not able to hear you. So anyway, सोम की आवाज नहीं आ रही है। So रोशनी, आपने you trained for the 21 kilometer during the event and आपने काफी सक्सेसफुली अचीव भी किया अपना टारगेट। आपकी परफॉर्मेंस 3 आवर प्लस से 2 आवर 30 मिनट समथिंग रही। तो दैट्स रियली गुड इम्प्रूवमेंट आई मस्ट से। ड्यूरिंग 100 डेज में अगर 30 मिनट्स कोई इम्प्रूव करता है, दैट्स अ गुड साइन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दैट। सो आई वांट टू नो कि आपकी फीलिंग्स क्या रही होगी उस टाइम पे कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग, एंड हाउ डिड यू सेलिब्रेट दैट? Sir, before I joined the 100 days, actually I started running very recently. जैसे कि आपने बोला कि 2020 दिसंबर में ही मैंने स्टार्ट किया। फिर there was फिर से कोविड एंड फिर से लॉकडाउन, तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज तो थे ही लाइफ में। एंड मैं बहुत कैजुअल रनर थी, मतलब कोई प्लान या ट्रेनिंग कुछ फॉलो नहीं करती थी। कभी मन किया तो 10 कर लिया, कभी मन किया तो कुछ भी नहीं किया, सारा वीक just like that. So the before HDOR, I literally had to struggle while running. मतलब एक साथ रन भी नहीं कर पाती, I had to stop, I had to pause and walk and all that. So then I joined the HDOR, and then there was so much consistency कि every day कुछ ना कुछ करो, like you can run, you can walk. So that brought some kind of a discipline in my training. And फिर जब मनीष सर के साथ हम लोग एक साथ में ट्रेन किए, so we were all from the different backgrounds. So मुझे ऐसा नहीं लगा कि I am not very strong runner, so I am at a disadvantage. ऐसा कुछ नहीं feeling हुआ. So Manish sir had addressed us, each of us, in a very unique way. So he used to give us very good flexible training plans, ताकि ऐसा ना लगे कि किसी दिन 2 kilometers करना ही है, कुछ भी तरह से करना है. We never felt burdened. So कुछ दिन he used to give us walking, some days he used to give us jogging, easy joggings, and then weekends में long runs. So it was a good combination of all kinds of activities. So that is how I think the consistency increased, and therefore stamina also increased. So by the time I ended the entire program of the 100 days, I was really very happy कि मैंने अभी तो like I've achieved something nice, good timing मिला, और form भी improve हुआ. I'm not feeling so much fatigued and tired after running. So I actually got into running seriously after this HDOR training program. So I'm more than thankful for being a part of it. ग्रेट, ग्रेट। सो इस साल के लिए कुछ स्पेसिफिक टारगेट? Yeah, I'm planning to run 42 next year. Let's see. ग्रेट। सो विनय, आपके लिए एक स्टूडेंट तैयार हो गए। मैं कुछ पूछ रहे थे आप? No, I was just appraising her and congratulating her, because as she said, you have different people around you, they have different timings, so at times we get carried away by what others are doing. But I always say to everyone when someone talks about timing that just look at how many people are running, forget about at the pace at which they are running. For example, if you have done a half marathon, then just think out how many people are there in India at your age and how many of them are even thinking about doing 21 kilometers, and you have done that. Doing that itself is a very, very big achievement, and then setting up a target, achieving it is a commendable job. So a big applause from my side, because
everyone has a lot of things to manage, but being females, there's always an extra thing which they have to manage. The house, even if you compare it with males, then a female will always have something extra to manage. And along with that, being in Kolkata, I think weather is also not that good during the summers. And then, improving and putting in all that hard work, a commendable job. So keep it up. Great. Superb. So one more thing I want to say, Yeah. because we are not from professional running background, we are just like out of hobby, out of passion, we have joined this activity. So to balance everything, our professional life, I have a 5-year-old daughter, her school and online classes and everything. So to manage everything and then find time to run in the morning. So this was, I think, very well done because Manish sir had designed such a flexible and a good program for us during this 100 days. So we never felt burdened or we never felt like, pressurized कि अब मुझे तो ये करना है, कल सुबह उठ के जाना है. So we happily, could do this and stretch it out over the week. So that really helped a lot. Sounds great. Superb. ओके सो अभी हम फुरकान अली के पास चलते हैं एंड उन्होंने भी लास्ट डे 42 किलोमीटर किया था 100 डेज ऑफ रनिंग किया राइट टू प्रूव कि यस ट्रेनिंग सक्सेसफुली हो गई मेरी एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ वो बोलते हैं गुरु दक्षिणा विनय को गुरु दक्षिणा थी लास्ट डे सो आपने 42 किलोमीटर किया 5 आवर्स 10 मिनट्स में दैट्स रियली कमेंडेबल एंड बहुत कम लोग कर पाते हैं 5 आवर्स के टाइमिंग में सो अपार्ट फ्रॉम जो विनय बोलते थे कि ये करो वैसे करो ट्रेनिंग आप कुछ एक्स्ट्रा करते थे उसमें कि नहीं यार मैं डाइट में कुछ ऐसा ले लेता हूँ मैं अपनी हैबिट कुछ ऐसी चेंज कर लेता हूँ नहीं आपके क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करूं तो विनय सर का जो स्ट्रक्चर्ड प्लान था तो उसमें उन्होंने एक कॉलम ऐड किया हुआ था दैट इज ए कॉल्ड रैक सिस्टम सिस्टम इन व्हाट बेसिकली वी आर फ्रॉम आईटी सेक्टर राइट so rag red amber green okay if you completed your target that says green if you somehow near about your target it's amber and if you completed that is green okay so like first week हमने अपना target complete कर लिया I was green and later on somehow due to professional things and all I was not able to complete तो मेरे शीट के सामने बहुत सारा रेड दिखता था फिर सडनली आई रियलाइज कि नहीं अभी हमारे कोच सर इतना हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कभी कभी मॉर्निंग में जाने से पहले रात को 1 बजे सर प्लान बना के रेडी करके भेजते थे तो अपने को भी शर्म आती थी कि नहीं मेरे को जाना चाहिए so that way I have carried out the plan और ये जूम सेशन जो बीच बीच में इरना बा मैम करती थी तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया लाइक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ कि मई के आसपास मैं कोविड इन्फेक्टेड हुआ था मैंने रिकवर किया सो कोविड ड्यूरेशन में मेरे को काफी चैलेंज हुआ था कि मैं बेड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मूव नहीं कर पा रहा था सडनली हमने थोड़ा सा साइकिलिंग स्टार्ट किया देन ये आपका HDOR का प्रोग्राम आया सो हमने HDOR ज्वाइन किया आई थॉट कि अगर कुछ करना है तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1 to 100 एंड इरना मैम ने हमें इंट्रोड्यूस कराया विनर सर से सडनली हम जो फर्स्ट लेक्चर वे था तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया एटलीस्ट हमारा 8-9 के आसपास पेस रहा जब सेकंड जोन में हम गए तब वहाँ पे हम 7 के आसपास ही थे बट वो 1 डे से लेके 93 डेज तक हमारा सेम था कि कुछ रनिंग क्रैक नहीं हो रहा था 730 जा रहा था दो लास्ट 30 डेज के प्लान में सर ने स्पीड रन भी डाला बट मेरा स्पीड नहीं इम्प्रूव हो रहा था तो जूम सेशन में मल्टीपल टाइम हमने डिस्कशन किया विनय सर से क्वेश्चन भी करते रहते थे बट समहाउ 93 डेज के बाद थोड़ा सा क्रैक हुआ फिर विनय सर से डिस्कशन किया एक लखनऊ का स्टेडियम रन था सो आई थिंक पहले विनय सर भी वहाँ पे आ रहे थे बट समहाउ उनका कुछ दूसरा कमिटमेंट था तो वो नहीं आए
I was very excited कि मैं विनय सर के साथ दौड़ूंगा, but somehow it was not happen. But फिर स्टेडियम रन था, तो थोड़ा सा मैंने एक और चेंज किया उसमें, कि पास में एक स्टेडियम था, तो उसका स्टेडियम का मैंने 14 डेज ट्रेनिंग कर लिया, 5-10 किलोमीटर वो लूप्स में जो रन करना होता है, क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी टू रनिंग इनटू लूप. बट समहाउ जब हमारा मैराथन डे आया, तो मैं ऑटो से वहां गया. बैड लक, मेरा मोबाइल ऑटो में ही रह गया, एंड आई वाज रनिंग विदाउट मोबाइल इन लूप्स. तो मैंने सोचा ठीक है, कोई नहीं, 100 लूप करने हैं हमें, 400 मीटर का है, 100 लूप कर लेंगे तो हमारा 41 के आसपास वो हो जाएगा. तो समहाउ काउंट करते 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 सडनली अनाउंस हुआ कि नहीं, आपका 42 किलोमीटर हो गया, आप लूप से बाहर आ जाओ. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा मैराथन 5:30 में होगा, बट लकीली अराउंड कंप्लीटेड इन 5 and 10. That's really nice, really nice. And I would also like to talk about a couple of things about HDOR. इसके स्लोगन्स आते हैं, वो काफी अच्छे रहते हैं. लाइक आप 10 डेज, आपका 70 डेज में कोई एक मॉर्निंग में स्लोगन आता है, Right. जैसा विद बैकग्राउंड सीनरी एंड ऑल. सो इट्स सिंकिंग का भी काफी ठीक रहता है कि टाइमली आपका चीजें सिंक हो जाती हैं. Right. आपके साथ. We are improving on that because improvement is something जो कि continuous process है, जो चलता रहता है. And हम as a SDR, मेरे से ज़्यादा मयंक समझते हैं इस चीज़ को, because he looks after the technical things, कि ये चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करती है. Because मयंक खुद एक मैराथनर है, and अभी वो रनिंग करते हैं रेगुलरली. So उन्हें पता है कि एक रनर को क्या चीज़ मोटिवेट करेगी एंड उसको टेक्निकली कैसे किया जा सकता है. करेक्ट. एंड जो आपने कहा कि आपको विनय सर के साथ रन करना था, सो उनका अभी रिसेंटली फुल मैराथन का टाइमिंग बताया था मैंने. सो आई थिंक आपको फिर से एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. डेफिनेटली. फुरकान मेरे से मिलने के लिए दिल्ली भी आए थे, कुछ काम से, अपने ऑफिशियल काम से भी आए थे, तो हमारा मिलने का प्रोग्राम भी सेट हुआ था, बट हम लोग मिल नहीं पाए थे. बट थैंक यू फुरकान कि आप आए, मिले, मतलब एटलीस्ट मिलने की कोशिश की. ऑफिस में आए मेरे, और एक बुक भी मुझे वो गिफ्ट करी उन्होंने. नाइस. थैंक यू सो मच फुरकान. थैंक यू विनय सर. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू जॉइन एसडीआर अगेन. लाइक आपने पहले ही बताया कि लाइक कई रनर्स हैं जो उन्होंने पहले 42 किया, देन अल्ट्रा रनर किया, देन 100 किलोमीटर में गए, 24 आवर्स में गए. विनय इज एग्जांपल जो अब भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए 100 डेज प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं. दैट्स गुड. अब हमारा नेक्स्ट गोल एसडीआर को यूज करके फिर अगले स्टेप में बढ़ना है. लेट्स सी हाउ इट गोस ऑन. ऑल द बेस्ट, यू विल बी एबल टू डू इट. बिकॉज 100 डेज ऑफ रनिंग प्रोग्राम को लेके मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आपने सोचा है कि यार ये चीज़ हो करनी है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपके पास, आप उसको 100 डेज में लेके आइए, आप वो अचीव कर लोगे. उसकी वजह क्या होती है ना कि हम अकेले नहीं दौड़ रहे होते हैं उस टाइम पे. लास्ट ईयर 19,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, इतने लोग साथ में रनिंग कर रहे होते हैं. तो एक लाइक माइंडेड लोग होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को ढूंढ लेते हैं, यार ये भी तो मेरे से ही रनिंग कर रहा है. सो वी स्टे मोटिवेटेड, हम आगे बढ़ते रहते हैं. अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर हम फिजिकली अगर अपने आसपास देखे, अपने फ्रेंड्स को बोले यार सुबह रनिंग करेगा, तो यार 5 बजे कौन उठेगा, मैं नहीं उठता. होता है ऐसा. बट इन वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारी लिमिट्स बहुत बढ़ जाती है, तो हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा. एंड यस, 100 डेज ऑफ रनिंग हेल्प करता है उसमें, अगर आप सीरियसली कोई प्लान फॉलो करते हो. क्योंकि कुछ ऐसा फिनिशिंग क्राइटेरिया नहीं है. फिनिशर क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 40 डेज करना है, तो किसी भी ट्रेनिंग प्लान में फिट हो सकता है. ग्रेट. सो नाउ let's ask Pema. So Pema, you have done 21 kilometer before joining the program, and you have done 30 kilometer. So I think now you want to bridge the gap of those 12 kilometers. You want to do the 40 kilometers this year, right?
Yeah, definitely. Good evening, everybody. It's so nice to see everyone here. And um, for me, personally, of course, yes, 42 is what I aim to get there at some point. I'm not sure when. Um Besides professional, personal life, running is something I really enjoy, and it's something that I feel it releases all my stress in the morning. I'm like, Mhm. once I run, I'm ready to go and face the world. So, Coach Binay, I'm looking at you. कभी तो complete कराओगे आप? Last year, uh, Yes, ma'am. Yes. is there an issue with the network? We can hear you. Your video has frozen. Yeah. Now, are we okay? Are we good? Yeah, it's fine. It's fine. Yes, ma'am. Okay. There's Okay. So this year, I'm sure you will be able to do 42 kilometer, and we wish you all the best. And I have full trust on Binay. वो आपको रन करवा देंगे 42 किलोमीटर. And are you able to hear us, Pema? Because your video is frozen. I think some network issue at her end. So राजू सर से बात करते हैं. Hey, So Kuldeep sir. hey sir. Thanks for the So what's your opportunity. next target? Ultra? I'll tell you as part of the story, right? But let me tell Okay. you a couple of backstories, right, which are interesting. So my first timed 10K run is in 2018, Eighth Hyderabad Marathon. And after running 7th kilometer, I was thinking that today is my last day. I'm going to die before I reach 10 kilometers. Right? and I still finished, right? The next year, the target is to reach within 1 hour 20 minutes, which is the qualification criteria for half marathon next year. So in 2019, I successfully did that. And in 2019 or 20 February, right, I signed up for my first half marathon with Hyderabad Runners Club Run, right? And that time also, after 17th kilometer, I thought that this is going to be my last day here, right? After 18 kilometers, a lot of cramps, right? Couldn't move well, right? Basically dragged my feet all the way and somehow finished it, right? 2020 February is my second half marathon. And that time also, basically, right, no cramps, nothing. I could successfully complete everything, and basically not too much of a bad this one, right? Bad feelings or hurt kind of thing, right? But those are the only two marathons I ran before taking up this full marathon training program. And the other backstory is basically once the pandemic started, one of my biggest challenges is, right, how to kill time, right? Because I'm saving 2 hours a day from commute. And how do I effectively use it, right? While not succumbing to any depression or being sitting home, right? Basically, whatever. And 100 days of running, HDOR platform itself has become a daily platform for me, right? Whatever you guys do, takedown challenge, steps challenge, this, that, everything pretty much I used to subscribe starting middle of 2020. And basically 2021 HDOR program, basically I latched onto that as an opportunity. And when Irina started this program, I was jumping with joy, right, for two reasons. First of all, I'm not going out. I couldn't meet any trainers, right? Basically, long training program in person is going to be a challenge, but I still need training, right? Basically, 21 kilometers, I know how tough it was on me. So I was looking for a guidance coach and all these things, and having someone like Binay coaching me is like a dream come true, right? Unless it's HDOR platform and Irina's program, right? I couldn't have even talked for a minute to Binay and basically get any guidance from him, right? So thanks to this program, I got enrolled into that. And if I didn't get an enrollment, I thought I was going to kill Ba, basically. No, just kidding. But I was so serious to get enrolled into that, right?
So, And Raju sir, you are very active in Hyderabad runners community also. So your yes, friends must be asking, what happened to you? How your performance is going up? so during the program, actually, I have certain visuals. I don't know how I can share, right? Strava says my performance improved by 200% in a year, right? After the program concluded, by October 31st, 2021, my performance improved by 200%, right? I think I could share it in subsequent HDOR community posts and other stuff, right? Sure. The other thing is, before this training program and the regular running, my presence in Hyderabad runners is pretty negligible, right? But now, at least probably about 20-30% of serious Hyderabad runners, hopefully they know my name, right? And probably they can recognize me on Strava and other stuff, right? Um, and a lot of guidance comes to me from them. A lot of appreciation comes to me from them, like Molugu Ragurao, right? Who is on this call, I guess, right? As an audience, and several other team members of Hyderabad runners. Right. So going back to this, right? I have been subscribing to almost every program. I subscribe to this. I subscribe to the training, and still I was hesitant, right? Basically, and then when Binay sir asked, like, what is your goal by the end of the program? I wrote it in the spreadsheet saying that I want to complete a full marathon within 6 hours 18 minutes, because 6.5 hours is the qualification criteria for Airtel Hyderabad Marathon, right? So I just want to get there and see that whether I can qualify for that. So And I'm if I'm not wrong, you finished the Airtel Hyderabad Marathon successfully afterwards, yes, afterwards, yes, right? yeah, Yes, I yeah. have seen that post somewhere. Last December. Right, And right. that's an interesting Congratulations for that. backstory as well. Yeah, thank you. So when I started the program, So, right, basically Binay sir gave me all the structured program we talked about. I never ran intervals before that, right, that seriously. But he introduced interval runs, right? He introduced parlay runs, and then some speed training, endurance training. And usually he's run as little as possible if you can, right? Because that diversity is very important, right? So his weekly plan for me used to be somewhere between 6 kilometers and 25 kilometers, right? Within those 7 days, right? And at varying speeds and all that stuff, right? So every week I'm more like a student looking for homework, right? And he used to provide all the red, green, amber kind of codings and all that stuff. So I found an interesting way to not get any red and amber. So what I used to do is basically I used to take his weekly program. I took his permission and changed that program to my personal this one, right? Basically, I have a lot of meetings this day. I can't run 10 kilometers. I'm going to run only 6, right? And so on. So I used to alter that. So that way, somehow I used to get green almost every day, right? Superb. During the 100 days. and thanks, Binay sir, for being so accommodative. It's more homework for him. And sometimes I was down, but whenever I was down, there used to be a midnight correction from Binay sir, right? And his first run was 5 in the morning, and in the midnight he sends me a note saying that you can do this, you need to do this, and all that stuff, right? So that kind of motivated me. If he is working so hard in the middle of the night, why can't I wake up at 4 in the morning and complete this run? This is for me. He is doing all this, right? So that really helped. So after about 2 weeks or 3 weeks of observation, Binay sir corrected my timing, saying that I'm going to run it in 5.5 hours. Right? I was thinking, right, he must be joking, right? Because This is not my cup of tea. yeah, this is not me, right? I'm a slow runner. I started at 50. I'm a little conservative. Don't want to run faster. Don't want to get injured. Test waters before doing anything, right? So I was not believing that, honestly, but still continued with that and continued with whatever training he gave, right? Basically, just follow it blindly with whatever corrections I can make for the week. And it is awesome experience. It's really And, nice. Really and nice. couple of more backstories, right? Funny stories. Third week,
I ran 99 kilometers. It's like a student trying to impress the teacher, right? I can do 100 kilometers a week kind of thing. And I said, Binay sir, I'm going to do 100 plus kilometers next week. And then he said, don't do that. Just go with 80 kilometers, right? That's good enough. If you can do a good run rate of 80 to 90 kilometers a week, that's good enough for running a full marathon. And he said for his non-ultra runs, like full marathon, he practices that very religiously, right? He doesn't overdo that. Right. And he gave some examples, and then I'm convinced. The second thing is basically in the last 2 weeks, I was so worried because people on the internet, people who are experienced 42 km runners, they say that you need to run at least 130 or 35 kilometers before your full marathon. So I used to nag him probably a couple of times a week, saying that, sir, should I run 30? Should I run 35? Because your max is like somewhere around 27, 28 kilometers for me, right? And he said, you are doing fine. You will do it. You will be able to do it, right? So on 31st of October, basically, I started running in our own premises, basically local roads, and without any cramps, right? Without any worrying factors, just like that, right? Just kept on running, kept on drinking water as he suggested, and then I could finish it off. Great. That's Amazing an to hear, awesome. Go ahead, Kuldeep. It's a really amazing story, sir. And when we are following a training plan, so we do not have to do anything. Just see what we have to do and do it. Otherwise, what happens today? Should I run 10 kilometer or 12 kilometer? This week, what should be my target? 30 kilometer, 40 kilometer. So while following a training plan, all doubt goes like this, and we'll just follow a training plan. So during this, meanwhile, we got one query from Anil Kumar. He's asking any viewpoint for those who are averse to idea of daily runs. So Anil, रनिंग में एक ट्रेनिंग प्लान सभी को फिट नहीं होता है. सभी की बॉडी अलग है, सभी की हैबिट्स अलग है, सभी के टारगेट अलग अलग होते हैं. सो यू कैन फॉलो एनी प्लान. ओके, 100 डेज में आप को जरूरी नहीं है कि आप डेली रन करो. 40 डेज इज द फिनिशर क्राइटेरिया. आपने अगर 40 डेज रन किया, डेटा सबमिट किया हमारे प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुली, यू आर अ finisher. Okay, and we have a minimum mileage that is required is 2 kilometer. So it's not necessary कि आपको रन ही करना, आप वो वॉक भी कर सकते हो, इजी वॉक कर सकते हो, मे बी इन 25 मिनट 30 मिनट्स. सो बहुत रिलैक्स वॉक होती है 30 मिनट्स में 2 किलोमीटर करना. सो आप वो करके भी अपना दिन कंप्लीट कर सकते हो. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको डेली रन करना है 100 डेज ऑफ रनिंग में. I hope आप अभी कॉल पे हो and we are able to answer you. Okay, so let's go to केदार. केदार, आपने अभी 2018 से आप रनिंग कर रहे हो, 4 इयर्स हो गए हैं, ठीक है. एंड आपने काफ़ी टाइमिंग इम्प्रूव की 21 किलोमीटर में. So during the course of time, during the training time जब आपको मनीष ट्रेन कर रहे थे, so आपको कुछ ऐसा चैलेंज लगा कि यार ये मनीष सर ने मुझे क्या दे दिया, ये मेरे से नहीं होगा? कभी आया ऐसी फीलिंग? ऐसी तो मेजरली तो नहीं आई, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. इट वाज मेरे लिए ब्रेकिंग द 10 to 21 बैरियर वाज अ ह्यूज थिंग. जब इरीना मैम का मैसेज आया ग्रुप पे एंड देयर वाज दैट सच अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बीइंग प्लान्ड, आई वाज कंप्लीटली इलेटेड. मैं ये सोच रहा था कि मतलब दिस इज लाइक अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड प्रोबेबली आई वाज इन द फर्स्ट 2-3 that went into and went for this program. So I have always used the HDOR platform for consistency. ठीक है, मैंने अपस्केलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसको सोचा नहीं था, बट लास्ट ईयर वाज द ईयर दैट we actually thought that yes, HDOR can be used for upscaling your level. You can strengthen, you can move forward, right?
what is progression? Progression is you keep moving forward. That is what it is all about. So ट्रेनिंग प्रोग्राम जब चालू हुआ था तभी मेरे दिमाग में से बहुत सारी चीजें थी कि ये हमने अभी तक सब फिजिकल ट्रेनिंग ही अटेंड की है, या फिर टॉकिंग टू द कोच वन टू वन, डिस्कसिंग दीज थिंग्स, विल इट ऑल बी पॉसिबल? दीज वर द एप्रीहेंशंस दैट आई स्टार्टेड द ट्रेनिंग विद. लेकिन thanks to Coach Manish, thanks to Irina ma'am, that it was handled so well, it was coordinated so well. We had Excel sheets where discussions used to happen on a regular basis. मेरा हर रन देखा जाता था, मुझे ये बताया जाता था कि ये कैसे मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है. इनफैक्ट आई वॉज मेरे टाइमिंग्स एंड आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन वेर इन वीकेंड्स वॉज नॉट, आई कुडंट हैव लॉन्ग रन्स ओवर द वीकेंड्स. एंड Coach Manish was something, he was great enough to actually set up the plan in such a way that I could run midweek. I could do my long runs in the midweek. So ये भी personalized planning हो पाई थी, ये भी discussions हो पाए थे. Then for the last 3-4 years, I have been I think 2019 was the first year I registered for HDOR, and I have never been able to complete 100 days of running. Right. So this was kind of the first year that I was actually able to do following the training plan and complete those 100 days. I was like, I shared all this on all my media handles. It was like a feeling for me where I could move forward. And to come to that, at the about 80-85 days पे, because of some other reason I had, मुझे injury हुई थी. So मैं हमें मतलब हमारे आपस में डिस्कशन हुए थे, हमारे जूम सेशंस रेगुलर होते थे. सो कोच मनीष हमें रेगुलरली बताते थे, मतलब बेसिक्स लाइक व्हाट वी यूज्ड टू हैव प्री रन हमें क्या खाना चाहिए, रन के बीच में क्या देखना चाहिए, व्हाट इज इट दैट वी नीड टू फोकस ऑन, राइट. वी यूज्ड टू कीप नोट्स एंड वी यूज्ड टू टेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो just 10 days before मुझे एक इंजरी हुई, not because of the training but because of me playing cricket during that time. And we were under the impression that I will not be able to complete the training program. So 2 days before Coach Manish ने मुझे बोला था कि देखो अगर आप कर सकते हो तो कोशिश करो, नहीं तो छोड़ दो. तो लास्ट डे पे मैं बाहर निकला था with the idea that I will, अगर मैं complete कर पाया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो we know that injury is always there. But what really helped me is, I took out all the notes from that 100 days जो trainings हमारे पास की थी, and I could run that run without any cramps and without any injury. Things that I was not paying attention on इसके पहले, जैसे मैं पेस पे बहुत ध्यान देता था, and ये coach will actually vouch for it कि मैं बहुत ध्यान देता था कि मेरा पेस इतना क्यों नहीं है, मेरा पेस इतना. सबसे पहले तो उनके लिए ये चैलेंज था कि वो मुझे ये बताए कि भाई धीरे भागो. ठीक है. That was the first thing that the training started with, and that is how I learned that yes, this is something, if I need to learn wrong, I need to reduce. So these were the personalized things that actually went through, and I never felt like there is a group or a batch of people. We always felt like we had a personalized training plan, and हम लोग उसके हिसाब से workout कर रहे हैं. We are moving forward based on that. So that was definitely part of it. And to be part of HDOR, it's something that from 2019 I had been trying to complete those 100 days. पहले साल में I did about 40 days. Of course, I finished all the years. I was a finisher all the time. But the first year I was able to do 40 days. The second year was majorly locked down, so I used to run indoors. And indoor running में भी ऐसा situation था कि the tech was actually, I did not have anything where Strava was not calculating and all that. And the tech was in such a way that my runs were not calculated. But I kept on. I said, okay, all this was solved in the 21, wherein I also invested in a Garmin watch. I also went ahead with something. So there were many things that were upgraded, improved in the HDOR platform also during this time. And to tell you frankly, those 100 days were really fun. It was fun, and we learned and we upscaled. That was the whole part. So to answer your question, there was nothing that the coach ने मुझे बोला और मुझे ऐसे लगा कि ये क्या दे दिया, ऐसा मेरा बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था. बट मेरा एटीट्यूड हर बार ऐसे था कि अगर ये मुझे दे रहे हैं कुछ
तो आई हैव टू डू इट, क्योंकि Great. ये अपना इतना टाइम निकाल रहे हैं, मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कुछ Right. करूं, एंड आई विल डू इट. So Yes. the last day doing that 21 kilometers was actually with I had kept my injury aside, and with that complete idea, it was in the back of my mind that he has invested 100 days in me, and it's my responsibility to complete it. So Correct. that was the whole idea. So like I Great. said, we had fun and we Mhm. finished it and achieved it. Post that, I did my personal best for a 10K. To be precise, I finished it in an hour. Before that, my timing was 1.5 hours. And now, post that, I did one race which I'm doing, and I have not yet done a 21K race. I have run 21Ks, but I have not done a 21K race. I'm expecting to run one the next week. So hopefully, I'll be able to complete it this time. Definitely, you will be able to do it, and I'm sure Manish will be proud of you. And you will feel proud कि yes, Manish sir ने मुझे coach किया. Yes, that I am already proud of. So Super. So meanwhile, we are getting a query from Anita. She's asking, what would be the suggested kilometers per week for beginners? So, as she is already in the steps challenge and she's highly motivated after doing the steps challenge, and it helped her a lot. So, Anita, as we suggested, listen to your body. Try to try to start running as per your capacity. You can mix run and walk initially, and gradually your walks will automatically will be converted into run. But yes, आपको start करना होगा कहीं से, and धीरे धीरे वीकली माइलेज भी बढ़ेगा, आपकी पेस भी टाइमिंग भी improve होगी, and I'm sure Binay and Manish will agree with this. Yes. Superb. So I hope सोम अभी हमें सुन पा रहे होंगे एंड उनकी आवाज भी हम तक पहुंचेगी. तो सोम, आपसे ये सवाल है कि आपने जैसे अभी रेसेस वगैरह भी कर ली है, ठीक है, सो यूजुअली आप रेस डे के बाद कैसे सेलिब्रेट करते हो? क्योंकि सबका सेलिब्रेट करने का अपना अपना तरीका होता है. कोई फैमिली के साथ आउटिंग करता है, या फिर रेस हो गया पूरे दिन सोना. सो आप कैसे सेलिब्रेट करते हो अपने रेस डे को? Som, we are not able to hear you. No, Som, we can't hear you. नो इशू. सो हमने सभी के व्यूज सुने, एंड एवरीवन ने एक चीज कॉमन बोली कि कोच मनीष एंड कोच विनय ने काफ़ी एफर्ट्स डाले उनको अपस्केल करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग में, एंड उनको उनके टारगेट तक पहुंचाने में. एंड दैट्स रियली a commendable task they have done it. So from the team HDOR, we also want to thank Binay and Manish for this. And as a small token of appreciation, we have this certificate for them. I hope I will be able to share my screen. I'm not sure. Let me do it. So this is for you, and congratulations. And we are really proud of you that we have a runner like you जो खुद भी रनिंग करता है एंड पूरी को अपने साथ लेके चलता है, एंड सबको उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है. Thank you. And of course, Manish, this is for you, and you have done a really great job. कि जो 10K करने वाले थे उनको 21 किलोमीटर तक लेके आए. नाउ आई थिंक वो
विनय की बस में जाएंगे and you will get new people. Yes, sir. So really, Very happy it they was achieved a nice, nice. wonderful job you have done, and yes, congratulations to all the participants जिन्होंने ट्रेनिंग की सक्सेसफुली फिनिश किया एंड टारगेट तक पहुंचे. And in interest of time, we have to wind up this talk show now because yes, विनय को अपने ट्रेनिंग के लिए भी जाना है. Yeah, Pema, you want to say something? I'm so sorry. I actually got this. Pema, your voice is broken, not able to hear. Is it me or everyone? No, I there is some issue with network. But let me say thank you to God. Best, I have managed to enroll about 30 odd people from Arunachal, and HDOR is quite famous of them. Thank you so much for this platform. Thanks, Pema. Because of some network issue, we could not hear you properly. But I think I got the crux. So thanks for your nice words, for kind words, and hopefully this training program or events will help you in achieving your goals. And of course, you are from the city of Irina, ma'am. So उनकी पर्सनल एडवाइस भी काफी आप तक पहुंचती होगी. She got me into. Okay. Okay, thank you everyone. With that, we end our talk show. And to all of you. Yeah. And to our participants. Thank you, everyone. Registration for And, 100 days of 2022 is open, and you can join it and enjoy the fun of doing 100 days of running. One last thing I would like to add is, it was amazing hearing out stories of everyone, and a big thanks to Binay and Manish for all the time and effort which they have put in. And I would like to applause to all the trainees, those who have put in all their hard work. And as Kuldeep said, they have paid the Guru Dakshina to both their coaches. And the best part is, right now on call we have people from all corners of India. So okay, we are coming together as running, and it's so good to see that we are able to bring people from different parts of country together on one platform and connected with each other. So all of us share a common thought that let's go out and run and enjoy. So yeah, so just keep running, keep enjoying. Don't let running add any stress to your life. I said that let it be a stress buster. So once just be regular, be consistent, enjoy your running, timing and everything. Well, all those things would be side products. So just enjoy and keep running, and all of us will together scale new heights. Thanks a ton for all your time and for joining us for this. And a big thanks to all our audience for taking out time, listening out to all the participants and hearing out their wonderful stories. See you guys. See you soon. We'll be back again with another session with some interesting topic. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much, Bye-bye. Thank you. HDR. Thank you so much. Thank Thank you. you. Bye. Thank you.